Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fit and healthy at your place. So, today we will start with a new chapter of grammar, that is chapter number 17, and its name is tenses. This is the very important part of the grammar, and you all have to be serious while studying tenses. And please keep your eye and ear open while listening this lecture, as it is very important for grammar. It is the base of the grammar for higher standard. Fine, so let us start. This is the lecture number 1 of tenses. Let us start. So what do you mean by a tense? Tense is basically you all do action. फाइन, आप सब काम करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, घूमते हो, नहाते हो. सो एट व्हाट टाइम डू यू डू द एक्शन? किस समय आप कोई एक्शन करते हो, किस समय आप कोई कार्य करते हो. सो टेंस टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन. It basically tells us the time of an action. The tense tell us the time of an action. When the action is performed. Fine. When the action will be performed. Fine. When the action was performed. कब होगा, कब हुआ था, कब हुआ कोई काम. Fine. So what are tenses? Tenses tell us the time of an action. So you all please once read these sentences. They come to school daily. He came to hospital. I shall come home next Sunday. So what is the difference between all these three sentences? Means when the action is done. In this, the action is done on daily basis. Daily, the action which is the routine work. In this, he came to the hospital. He came, आया था, वह अस्पताल आया. Fine. The action which was done in past. भूतकाल, काल पढ़ते हो ना हिंदी में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. I shall come home next Sunday. मैं अगले रविवार आऊँगा घर. So the action will take place in future. So there are three kind of tenses. First is present, then past, then future. The action which we do on daily basis, or which is our habit, or the action which is done in present, that is present time, that is present tense. The action which the event or the any action which was done in past, so that is the past time. The action which will take place in near future or in future, that is the future tense, that is the future time. So these are the three kind of tenses. Fine. So tenses denotes the time of an action take place, whether sometimes in past, या तो past में हुआ action, in present, या तो present में हुआ, or it will take some time in future, या तो वो future में होगा. So there are basically three kinds of tenses: present, past and future. I hope you have understood this much. So let us move further. So now all these three parts, they are further divided into four sub parts. जो ये तीन मेन टेंस हैं, ये फर्दर डिवाइड हुए हैं चार अलग अलग भाग में, इनको हमने बांटा है. So first is present indefinite tense. It is also known as simple present tense. Then it is present continuous tense. Then it is present perfect tense. Then it is present perfect continuous. They all are not in your syllabus. There are only the first kind of first three tense and the second kind. Fine. And the past and the same. जैसे ही प्रेजेंट में है वैसे सेम पास्ट में भी है. इट इज पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. द सेम आर इन फ्यूचर ऑल्सो. इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. फाइन. इट विच इज ऑल्सो नोन एज फ्यूचर इंडेफिनिट. Then it is future continuous, future perfect continuous. So today in this lecture I will be teaching you this present indefinite, which is also known as simple present tense, and past indefinite, which is known as simple past tense. Fine. So the present tense, we will start with the present tense. So what is the means what basically is present tense? Present tense, the action which take place in present. जो
प्रेजेंट में हुआ है एक्शन. फाइन. So this present tense is divided into 4 subparts as I have already told you about this. That is simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So we will be just studying these first two are in our syllabus, but today we will be studying just this present, simple present tense. Fine. So what are the uses of this simple present tense? Simple present tense के क्या क्या uses हैं, कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, और how we will come to know that in this sentence simple present tense is used. Because simple present tense express करते हैं हमारी daily habits, जो हम रोज एक्शन करते हैं. फाइन. ये आर डेली वर्क. सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, स्कूल जाते हैं. दीज आर डेली एक्शंस विच वी डू. सो दैट कम्स अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस. टू एक्सप्रेस द साइंटिफिक ट्रुथ सच, जो कि बदल नहीं सकता. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. फाइन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. कैन दीज universal truth change? Can you change them? No. So in this we also use simple present tense to express the certain fact that is true at the present moment, and it is used to introduce any quotation, the quotation which we write. Fine. जो quotations लिखते हैं ना, like example, Keats says a thing of beauty is a joy forever. This is a simple quote. So you have to learn its uses. आपको इसके यूजेस लर्न होने चाहिए, कहाँ कहाँ यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शंस, डेली रूटीन, एंड फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ यू कैन से, एंड फॉर द सिचुएशन, फॉर द फैक्ट दैट इज ट्रू एट प्रेजेंट. फाइन. इट इज ऑल्सो यूज फॉर दैट. नाउ हाउ वी फ्रेम सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज द फॉर्मेशन? सेंटेंस कैसे बनता है? आप सबको पता है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट इज द डूअर इन द सेंटेंस, कर्ता, काम करने वाला. फाइन. देन कम्स द वर्ब. मैंने आपको भी इससे पहले चार्ट दिया था 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का. फाइन. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. वो बेसिकली बेटा मैंने आपको इस टॉपिक की वजह से ही दिया था कि हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा. इन दिस वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ द बेस फॉर्म, दैट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म, और उसके साथ हम एस और ई एस यूज़ करते हैं. फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट. फाइन. अब आप सोचोगे हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और एस और ई एस कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमारे पास, यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, व्हेन देयर इज, आपने प्रोनाउंस पढ़े ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. व्हेन the subject is singular, when we use third person singular pronoun, third person singular, कौन से? he, she, it. Fine. With them we use es, form of verb. With them we use es at the end of the verb. Like third person singular, he, she speaks, he listens, it swims. They are third person singular. और एनी नेम, या तो कोई नाम, लाइक द सन राइजेस. हमने राइज क्यों नहीं लिखा? आई एम टेलिंग यू दैट विद थर्ड पर्सन सिंगुलर और विद एनी नेम वी यूज प्लूरल वर्ब. वर्ब के पीछे एस और ई एस ऐड कर देते हैं. विद रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन, बाकी के बचे हुए, विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, विद फर्स्ट पर्सन प्लूरल, विद देम वी ऑल यूज सिंगुलर वर्ब, और उन सब के साथ वर्ब सिंगुलर होती है. आई गो, गोस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. फाइन. थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है. यू राइट, दे फ्लाई. आर यू गेटिंग? एस और ई एस वर्ब के साथ कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं या किसी का नाम. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट. इट ईट्स, ही ईट्स, शी ईट्स. Fine. The baby eats. And with the rest of the pronoun we use singular verb. I hope you all have understood. Now you can look at the example. I go for a walk daily. She speaks English fluently. He listens to what you say. You write about him. It swims fast. They fly a kite. The sun rises in the east.
So in homework you have to learn its uses, its formation, and you will write 10 more sentences. Fine. So next we move on to the simple past tense. Now where we use simple past tense, देखो अब हम simple past tense कहाँ use करते हैं. Look here, we use simple past. बेटा ये affirmative sentences होते हैं, simple sentences. Action, situation and event that occurred and finished in past. जो काम, जो भी action past में हुआ और past में ही खत्म हो गया. Fine, past में हुआ और past में ही खत्म हो गया. Repeated events and habits that took place in past. और जो भी हमारी habits हैं वो past में हुई और past में ही खत्म हो गई. Fine, past events with time expressions जिसमें आता है he went to Delhi yesterday, कल दिल्ली गया. टाइम के साथ भी टाइम हमें बता रहा है कि सब टाइम होता है 2 weeks ago, 2 हफ्ते पहले. लास्ट ईयर, पिछले साल. इन 2010. yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर. फाइन, लास्ट वीक, लास्ट डे. जो पहले एक्शन हो चुका है. सो सिंपल इज दैट simple present tense is used the action which took place in past. The action which took place in past, जो past में काम हुआ था. अब देखो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं. प्रेजेंट में मैंने आपको बता दिया. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस भी बता दिया मैंने आपको कहाँ यूज होता है. देन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ देखो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म, वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती थी, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फाइन, फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म भी बोलते हैं जिसको हम, और सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, और थर्ड होती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल. सो इन सिंपल प्रेजेंट वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म. सब बिल्कुल सिंपल है ये. सिंपल सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कहाँ कहाँ पे चेंजेस आते हैं. जब हम वी ऐड ई डी एट द एंड ऑफ द वर्ब. वर्ब के पीछे ई डी कब ऐड करते हैं. कुछ वर्ब्स, 90% ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए उनके पीछे ई डी ऐड करते हैं. एंड ओवर हेयर यू डू नॉट हैव टू मेक द यूज ऑफ एस और ई एस. सारे प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है. डू नॉट बी कंफ्यूज. लाइक वर्ब्ड, ईडी आया यहाँ. और बेटा किसी किसी में क्या होता है, हम वर्ब को चेंज करने के लिए जब सफिक्स प्रेफिक्स होता है जो पहले आता है, सफिक्स होता है बाद में. अब देखो आप, होप के पीछे ई आया, होप. अब इसमें हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या लगा देंगे, डी. इट विल बी होप्ड, डिसाइडेड, अराइव्ड. फाइन. एंड इफ द सफिक्स एंड विद वाई, इफ द सफिक्स इज प्रोसीडेड विद वाई, अगर वाई पे ख़त्म हो रहा है तो वाई को हटा के हम क्या लगा देंगे, आई ई डी. वी एड आई ई डी. स्टडी, स्टडीड. क्राई, क्राइड. फाइन. These are just the examples to help you out. Next is when the verb with a constant except W or Y. It accept W or Y and there is a stress on the vowel. और जो लास्ट में vowel होता है उसके ऊपर हम stress डालते हैं, like stop. अब इससे पहले vowel है, इससे पहले वॉवल है, हम वॉवल के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं. इट विल बी स्टॉप्ड, STOPPED. तो उसमें लास्ट लेटर क्या हो जाता है, डबल. बैन, बैंड, BANNED, बैंड. ट्रेवल, ट्रेवल्ड. इट विल बी TRAVE. अब लास्ट लेटर से पहले क्या है, वॉवल, तो उसके ऊपर क्या डालेंगे, स्ट्रेस. लेवल्ड, ट्रेवल्ड. फाइन. इट विल बी इन दिस फॉर्म. यू हैव टू ले स्ट्रेस ऑन इट. Now you can look at the examples over here. See the example, subject, verb second form plus object. I planted some trees yesterday. He lived in mountains for 8 years. They visited, verb second form, the capital in 2012. I hoped to go skipping. The school decided, subject, the school is the subject, decided is the verb second form, that all children must do exercise. Then the next sentence is
They arrived. They is the subject, verb second form, then object. They arrived at the city center. I studied about plants for the exams. Their children. This is subject, then verb second form, then object. Their children cried all the time at games. He applied to go gymnastic professionally. He applied to go gymnastic professionally. He is the subject, verb second form, then object. They traveled all over the place. They is the subject, traveled is the verb second form, then object. I hope you have understood the formation of simple past tense also and their uses also. Fine, you have to revise it, then only you will be able to understand. Now uses I have already told you. Now this is the homework solution. This is the exercise which we are going to complete it right now, which I gave you for the homework. This is the homework solution, you can check it. Antonyms and synonyms. Antonyms, they are the opposite words. Fine, and synonyms, they are the similar words. Match the synonymous words. Synonymous means similar. Famous, well known. Movie, film. Tales, stories. Possesses, earn. Fine. Normal, usual, and quick, fast, and it is rowdy. It will be where it is it is with noisy. Fine, it is with noisy. I hope you have understood. The next exercise is B part, antonyms, bowling. Match each word of its antonyms by drawing a line. Fine, these are the words given, you have to match with their opposites. Like question, answer. Question, answer is the opposite. Known, जिसको हम जानते हैं, it will be doubt. D-O-U-B-T, doubt. Next is carry, उठाना, drop, छोड़ना. Noisy, silent. Easy, difficult. Fine. So this is very interesting question. Try to understand, brainstorm on how you can get the friends in your residential society together and formulate a plan to save energy. You have to call your friends in your society and you have to make a plan. In that plan, the main motive of the plan should be you have to save energy. Fine, these 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 verbs given. You can take help from these verbs and write the sentences. I have written my own sentences. You have to write your own sentences. Fine. The sentences which I am going to tell you, those sentences I have written, and the sentences you have to write from your side also. Fine. So you can check the sentences what I have written, then you have to write the sentences from your own side. Fine. You can take the help of these sentences also. Now you have to write the complete story. Hi friends, see, I will tell you, it's written over here. Wait. See, it's here. Hi friends, saving energy is the need of the hour. We all know that global warming is on the rise. In such a case, it's our sacred duty to do a bit for Mother Earth. First of all, now points what we are going to do. Of all, we should switch to LEDs to reduce energy consumption. So we all are using television, so we need to switch to the LEDs. We should switch to the LEDs to reduce the energy consumption, as these are eco-friendly and save energy as well. To save water, we should avoid bathing in the tub and take short shower instead. So we should avoid bathing in the tub and we should use short instead showers. Sweeping the porch water before watering can be a good idea to save on water. After washing, put the clothes out in the sun for drying. So we should put the clothes for drying rather than using an electric dryer to save electricity. मशीन में कपड़े धो देते हैं फिर ड्राई करते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, तो बेटर है धो के सिर्फ सुखा दो. To save on fuel, fuel बचाने के लिए cars that run on solar power are a good option to keep the environment pollution free. So there are the many persons, they use the car which runs on the diesel, they run on the petrol. So you can leave that, you can
avoid that, and you can use the cars which run on solar power to keep the environment pollution free. I am sure if you are able to follow these things, अगर आप अब ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, we can do a lot in saving the earth from getting polluted. So we can change many things, we can reduce pollution in many ways. These are the points which I added from my side. You can add your own points. So answer will vary from student to student. Now next question, the last was this. Write a while. Find out the importance of the earth hour. I will be telling you what is the meaning of earth hour, and what you have to do over here is you have to write one slogan on earth. Like, this is the example: we need to care for the earth that we all share. Fine, this is the example. And see, now I have written over here one slogan, and before this one slogan I will be telling you what is the meaning of earth hour. Earth hour is a small step taken towards the meeting of big goal. To achieve the big goal, we took one step. We took one step that is known as Earth hour. It is a noble initiative started with an aim of saving the earth from damage. So why we started it? To save the earth from damaging. फाइन, उसको धरती को नुकसान पहुंचाने के लिए हमने एक स्टेप लिया जिसको हम बोलते हैं अर्थ आर. Earth hour is observed on the last Saturday of March of every year from 8:30 to 9:30 p.m. It is a symbol of commitment to our planet Earth. It was first started in 2007 in Sydney, Australia as light off event. Over here in Sydney in Australia, we started it as a light off event. Each of us should take a pledge. Pledge means shapath, to give a little love to the Mother Earth as our whole being depends on it. So switch off lights, plant trees, recycle and do your bit to save Mother Earth. मतलब आपको अर्थ को सेव करने के लिए हमने इसमें एक स्टेप लिया that is known as Earth Hour. So this is the slogan which I have written. You have to write your own slogan. Earth has enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Fine. So you have to understand it carefully, you have to write it, you have to complete the book exercise, and now this is your homework. You have to learn and write the formation of simple present I have told you, then simple past tense I have told you, and their uses also you have to learn, and you have to write 10 sentences on each. So आपको ये बहुत 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 ध्यान से पढ़ने हैं दोनों tenses. In next class we will move with further 2 more tenses. Fine. That's it for today. Thank you.